हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिड टर्म पेपर्स ऑफ 5th सेमेस्टर। मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों डिस्कस कर लूँगा और तमाम सब्जेक्ट्स के डिस्कस कर लूँगा। और मिड टर्म एग्ज़ाम नवंबर 2022 जो कि लेटेस्ट है। सो बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तानी लिटरेचर। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ डज मुमताज़ शाह नवाज सक्सेसफुली प्रेजेंट हर androgynous perspective through evolution of female characters in her novel The Heart Divided। The Heart Divided complete analysis के साथ मैंने कवर अप किया है अपनी वीडियोस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द अनप्लेजेंट इवेंट्स ऑफ पार्टीशन लीव स्कार्स ऑन द साइक ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान? डिस्कस इट विथ रेफरेंस टू द नॉवल आइस कैंडीमैन बाय बप्सी सिद्धवा। यस, थीम ऑफ पार्टीशन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसमें ये सारा कवर अप हो जाएगा। एंड देन इंट्रोडक्शन टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सिक्योरिटी एंड वाई ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। एंड पार्ट बी, आई आर के भी तमाम लेक्चर्स मैंने कवर अप कर लिए हैं। वॉर हैज़ बीन द कोर डिबेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन since it emerged as academic discipline after World War I, and within this context analyze the types and causes of wars in international relations, या IR. Write a short note on the following: the realist understanding of international relations or liberal view of international relations. And then next paper जो आता है literary criticism and theory. Question number 1, discuss Aristotle's views on relative importance of plot and character in a tragedy. And question number 2, how does Aristotle's opinion differ from Plato's view on poetry? वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सोशल लिंग्विस्टिक्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, social classes are not clearly defined or labeled entities but simply aggregate of people with similar social and economic characteristics, and social mobility is perfectly possible. Explain the relationship between language and social class in the light of the above mentioned statement by Peter Truggle. And further, question number 2, what are the factors that determine the status of a standard language? Supplement your answer with the example of standardization of Urdu language. And then question number 2 का part B है, explain the following with relevant examples: macro social linguistics, age grading, dialect continuum, RP received pronunciation, and creoles and registers आपने बताने। and then afternoon के देख लेते हैं। Social linguistics, question number 1, language is not only a source of communication but also a means of establishing social relationship and social identity. Discuss. Write a short note on following social linguistic terms: social linguistics and sociology of language, Pidgin and Creole. And then आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1, illustrate the following concepts. पहला है जी पार्ट ए, condemnation of poetry by Plato, tragedy versus epic. In part C, the philosopher teacheth but he teacheth obscurely, but the poet is the food for the tenderest stomachs. The poet is indeed the right popular philosopher, Philip Sidney ने कहा है। एंड देन पोइटिक डिक्शन के बारे में आपने बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सैमुअल जॉनसन कॉल्ड जॉन ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडर को कहा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, affirming his contribution in establishing English identity in English literary criticism. Discuss the light of the Dryden's seminal work essay on dramatic poesy. एंड देन आपके पास आ जाता है जी इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़।
Question number 1, explain how carbon dioxide moves across the planet through carbon cycle. Part B, what is meant by renewable resources and ecological footprints? Or question number 2, hey, what do you know about troposphere and stratosphere, and why these layers are of major concern of human beings? Or part B, hey, what is meant by biome? Write down the distinctive characteristics of desert forest biomes that present on planet Earth. और IR का पेपर है लास्ट. क्वेश्चन नंबर 1, critically analyze the annexation या referendum of Ukraine by Russian Federation with the help of a theoretical paradigm. कि IR की थ्योरी अपने अप्लाई करनी है, कौन सा बेस्ट अप्लाई होगा. एंड व्हाट पॉलिसी चॉइसेस वुड यू सजेस्ट टू द पार्टीज एट वॉर. बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन दिया है भाई. एंड देन हाउ Kenneth Walls and Alexander Vance approaches are different from each other in studying the behavior of states. Do you think historical class struggle can bring any change at the societal level and ultimately at state level? So this is all. Thank you for watching.